Hello everyone, welcome back. I'm live now. I hope the voice is clear now. Am I audible to everyone? You can just drop it in the chat box so I can just understand that the voice is audible now. Good evening, every learner. Very good evening to you. Can you hear me now? Okay, we are good to go now. So welcome everyone. Okay, that's completely fine now. Now we can discuss further about whatever we are going to discuss today. So first of all, I would like to say sorry for the inconvenience caused to you. Okay, that's really fine if it's audible now. Okay, so we can start our discussion about a few MCQs we are going to discuss here. And so let's get started. Okay, so this is basically a specific MCQ series about horticulture where we're going to discuss about few questions related to horticulture, few interesting questions. So first question is you have to tell that which element is responsible for pungency in chili, which is the element which cause pungency, the pungent flavor or pungency in the chili. So you have options in the screen. First option is synergin. Second option is basically isonate. Third option is capsaicin. Fourth option is sulfur compound, and the fifth one is none of the above. Now, among these five questions, you have to choose one. So I would like to see your answers in the chat box so I can just explain the answer. What is the answer for this question? Which element is responsible for pungency in chili? Okay, so many people are replying, and I'm glad that people are replying a good answer, which is yes. Adarsh, Dia, Agri Learner, Yashika, Sandeep, R15, Juma, and there are so many people. Agri Hacker. Yes, the answer is basically capsaicin. Capsaicin is basically the right answer. I would like to highlight it so you will just get a better idea about it. So this one is basically the answer, capsaicin. Okay, so basically these are the element which is responsible for the pungency in different fruit, we can say, or different vegetable. If we talk about the first element, synedrin, it is basically found in cruciferous family, where it is found in Brussels sprout, these kind of vegetables. Another one, isocyanate. Second one is isothione. Isothione is basically present in Brassicaceae, or we can say cruciferous family. Few crops like cauliflower, mustard seeds, all these vegetable. They basically has this content in it. When we talk about the sulfur compound, the sulfur compound basically present in onion and garlic. You can the smell, the pungency in onion and garlic is due to the sulfur compound. So the right answer is a C1, and so many people, so many students are replying a good answer. Now we'll move forward towards the second question. Okay, so I'll read out the second question. Second question is basically Pusa Nanna. You have to tell Pusa Nanna is the dwarf variety of papaya which is developed through. You have to tell the mode of development.
from which mode it is developed. Okay, you have options: hybridization, mutation, selection, heterosis, and none of the above. So what is basically the right answer for this question? Okay, one example I would like to give, that whenever you are reading a question, please read out the question correctly, because sometimes it depends how you are understanding the question. That is very much important for any competitive exam, because sometimes language is tricky, sometimes language is very easy. So both the ways you have to understand that what is the language of the question. So I am getting the answers here, and yes, Nirmal Kumar, Rupesh Bhardwaj, Ambarish Kumar, Aman Singh, Lakshman, Aryan Nair, Aman Singh, Sandeep Thakur, Diya Bansal, Niman Kumar. So many people are giving the answers, and glad to see that mutant. Okay, so the answer is second one. Obviously, it's a mutant variety. Mutant, through the mutant method it is developed. Now what is basically the mutant method? Mutant method is basically the method which basically made through the certain changes in the fruit crop. Okay, this is basically one of the important method of genetical breeding, and it is used, it can be occurred naturally or it can be induced in the plant. Okay, so the right answer is basically mutation. I'll just highlight the answer. This one, B, is basically the answer. Now we'll move further to the next slide, and the next question is in the screen is regarding banana. Okay, banana is very important crop in horticulture, and so many questions are asked from banana. So you have to tell that the fruit of banana is botanically called. What is basically the term, or what is the physiological category of the banana fruit? What you call, क्या जो है basically आप banana को term, banana का जो physiological categorization है उसके type of fruit का वो क्या है, you have to tell it. Okay. What is basically the option? You have option pepo, berry, pome, drupe, and stone. You can see the options and you can choose one option from it. Okay, so we are getting our answers here. Agriculture, Ambrish, Juma, Ved Prakash, Arya, Gursharan, Sandeep Thakur, Tulasi, Diya Bansal. These are the people who are giving the answer. Yes, answer is the berry. Okay, berry is basically a type of fruit which has multiple seeds. Okay, now you will say that banana doesn't have any seeds, so why it is a berry? Basically, if you will see, when you cut the banana, there are some black lines in the banana, inside the banana, that is basically considered as the seed of banana. Also, berry is basically a type of fruit. All those fruit which has multiple seeds inside it, that is categorized as berry. Okay, and when we talk about pepo, all the melon fruits, for example watermelon, muskmelon, these are categorized under melon. Okay, pome fruit are for example apple is a pome fruit. Okay, the botanically it is a type of fruit. For apple is pome. When we talk about the stone and drupe is basically for example plum, it considered as drupe. Stone, mango. Okay, it is considered as mango. Mango is basically a single stone fruit. It has single stone, that's why it's called stone. Okay, so the right answer is berry, and so many people has given the right answer here in the chat box. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ अगेन अबाउट द मैंगो. मैंगो इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम. सो आपको बताना है विच मैंगो वैरायटी सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग. देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता क्या है. हाई डेंसिटी प्लांटिंग इज बेसिकली HDP प्लांटिंग. वो उस तरह का मेथड होता है जिसमें ऑर्चिड में व्हाट वी डू इज वी ग्रो मोर नंबर ऑफ प्लांट एज इट इज ऑक्यूपाइड. ओके, नंबर ऑफ प्लांट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वी बेसिकली मिनिमाइज द स्पेस. ओके, दैट इज कॉल्ड हाई डेंसिटी प्लांटिंग. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द हाई डेंसिटी प्लांटिंग. अगर आप बहुत बड़े प्लांट्स को हाई डेंसिटी प्लांटिंग में अगर ग्रो कर रहे हो, तो देयर इज लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम यू नीड टू फेस. तो व्हाट वैरायटी यू कैन यूज फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग मैंगो के लिए? आपके पास ऑप्शन है सिंधु, आम्रपाली, मल्लिका, अंबिका एंड नन ऑफ द अबव.
what is basically the answer for this question? Please drop your answer in the chat box. Okay, so with Vidyansh, Diya, Agriculture by Arvind, Vidyansh, Himanshu Sharma, Ved Prakash Pandey, Gushan Bar. Yes, okay, you are saying Gusharan, you are saying that uh, you are saying 1600 plants. We are not talking about number of plants, but yes, we are talking about basically the variety, what variety we can use. So here the right answer is yes, for sure, Amrapali. There's a reason behind it. Amrapali is a dwarf variety. That's why we can use it in the HDP planting, high density planting. Okay, because in high density planting we minimize the space. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप. अब यहाँ पे सबसे पहले ये जानने के लिए कि पॉली एम्ब्रियोनिक फ्रूट क्रॉप होता क्या है, आपको पॉली एम्ब्रियोनिक एंड मोनो एम्ब्रियोनिक का कंसेप्ट पता होना चाहिए. पॉली एम्ब्रियोनिक एंड मोनो एम्ब्रियोनिक की अगर बात की जाए तो पॉली एम्ब्रियोनिक उन क्रॉप्स को कहा जाता है जिसमें एक सीड से मल्टीपल प्लांट्स जो है जनरेट हो सकते हैं. यू कैन सी दिस इमेज हेयर. सीड से जो है 1 2 3 प्लांट जनरेट हो रहे हैं. थ्री डिफरेंट प्लांट जो है जनरेट हो सकते हैं फ्रॉम द वन सीड ओनली. दैट इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनिक. ओके, मोनो एम्ब्रियोनिक क्या होता है? मोनो एम्ब्रियोनिक होता है, मोनो मीन्स होता है वन. ओके, मोनो इज बेसिकली वन. तो मोनोक्रॉपिंग में, सॉरी नॉट मोनोक्रॉपिंग, मोनो एम्ब्रियोनिक में क्या होता है कि एक सीड से सिर्फ एक ही प्लांट जनरेट होता है. ओके, दैट इज मोनो एम्ब्रियोनिक. अगर आपको पता होगा कि मोनो एम्ब्रियोनिक क्या है, पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है, तो ये क्वेश्चंस आपको डील करना इट इज वेरी मच इजी. ओके, अगर मैं बात करूँ मैंगो की तो मैंगो में पॉली एंड मोनो एम्ब्रियोनिक वैराइटीज होती हैं. इट मैंगो इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एम्ब्रियोनिक एंड मोनो एम्ब्रियोनिक. व्हाई? अगर आप बात करो सदर्न रीजन की वैराइटीज की, दे आर मोस्टली पॉली एम्ब्रियोनिक. और अगर नॉर्थ रीजन की वैराइटीज की बात करो मैंगो की, तो दे आर somewhere mono embryonic. Okay, this is the huge difference in the varieties of southern and northern region in India. Okay, next हम बात करते हैं सिट्रस की, जामुन की. एंड डी जो ऑप्शन है आपके पास, दैट इज 1 and 2, and the fifth option is all of the above. Now you have to tell me what is the basically the right answer for it. Yes, Gursharan, you are right. From one seed, there is multiple plants, or more than one or two plants can generate in polyembryony. Okay, so I am getting answers from Ved Prakash, Amrish, Aman Singh is saying citrus. Okay, Nilam Shesham is saying E. Okay, fifth one, Reshmi, Ved Prakash Pandey, and Gusharan, Rakesh Kumar. Okay, so many people are replying with the right answer, and the right answer is basically the fifth one, which is all of the above, because all of these crops has polyembryony. Okay, so these kind of questions basically ask. Okay, I'll just highlight the answer. All of the above. Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग सिस्टम इज बेसिकली ग्रोइंग प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स इन द सेम फील्ड एंड एट द सेम टाइम यूटिलाइजिंग वेरिंग हाइट्स. रूट डेप्थ, क्रॉप कैनोपी इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन. आपको बताना है ये जो है वो कौन से स्टेट में प्रैक्टिस की जाती है मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग. मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग इज वन ऑफ द वेरी फेमस मेथड ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, जिसमें हम हाइट के अकॉर्डिंग प्लांट्स को जो है लगाते हैं. यू कैन सी इन द क्लियरली सी इन द इमेज. हेयर इज द इमेज. यहाँ पे जो है हाइट के अकॉर्डिंग हम प्लांट को लगा रहे हैं. सबसे बड़ा प्लांट लगाया है, देन उसके बाद उससे छोटी हाइट का, देन उससे और छोटी हाइट का, एंड देन again followed by the small plants. Okay, so you have to reply कि वो कौन सी स्टेट है. बिहार एंड यूपी है, कर्नाटका एंड केरला है, जम्मू एंड कश्मीर है, पंजाब एंड गुजरात है, नन ऑफ दी अबव है. कौन से वो दो स्टेट हैं जहाँ पे मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है. सो यहाँ पे जो है तुलसी नायक, संदीप ठाकुर, सचिन कुमार, लक्ष्मण माधु, स्नेहा, सलोनी कुमारी, मीनाक्षी बनर्जी, नेवर गिव अप. ओके,
So the answer is basically B, Karnataka and Kerala. Now, what is basically the reason behind it? Why the multi-story cropping is practiced in Karnataka and Kerala? Why this question is basically question belongs to Karnataka and Kerala? Why? What is basically the reason? Why it is not practiced in the northern region? Why you don't see that mango के साथ हम कोई और crop जो है grow नहीं कर रहे हैं, या hardly you will see कि कोई crop grow हो भी रही है, but basically the tag for multi-story cropping is for the Karnataka and Kerala. What is basically the reason? Reason is there are a lot of plantation crop growing in the Karnataka and Kerala. Okay. So जो प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं दे आर हाई वैल्यू क्रॉप्स, और इनको जो है साथ में ग्रो किया जाता है अकॉर्डिंग टू हाइट. इफ यू आर ग्रोइंग कोकोनट इन योर फील्ड, यू कैन ऑल्सो ग्रो सम crop which has small height than coconut, then again the small height with the another crop. Okay, so these are basically practiced with the plantation crop. Mostly you will see with the plantation crop. That is one of the reason behind it. Okay, so the right answer for this question is Karnataka and Kerala. Okay, so those who are saying B, those are right. Karnataka and Kerala is the state where the multi-story cropping is usually and you will say oftenly practiced. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट स्किपिंग. स्किपिंग जो है ये क्वेश्चन में जो बात हो रही है, स्किपिंग इज द लाइटेस्ट. ओके, स्किपिंग इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल प्रूनिंग मेथड एंड रिमूवल ऑफ ओनली द टॉप 5 to 8 centimeter new growth is done. So to obtain a uniform level of pruning surface is practiced in which crop? Okay, यहाँ पे आपको बताना है कि स्किपिंग जो है इट्स अ काइंड ऑफ प्रूनिंग जिसमें क्या किया जाता है, टॉप पोर्शन जो होता है प्लांट का, फॉर एग्जांपल इट इज अ प्लांट, तो टॉप पोर्शन को 5 to 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 to 8 सेंटीमीटर तक क्या कर दिया जाएगा, प्रून कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा. क्यों रिमूव कर दिया जाता है? ताकि यूनिफॉर्म लेवल ऑफ प्लांट का जो यूनिफॉर्म लेवल है उसको मेंटेन किया जा सके. ओके, तो आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से वो कौन सा जो है क्रॉप है. देखिए, कॉफी है, कोकोनट है, कॉटन है, टी है या ग्राम है. देखिए, अगर हम बात करें कॉफी है तो कॉफी में नहीं स्किपिंग प्रैक्टिस होती है. कोकोनट में आप टॉप जो है ब्रेक नहीं कर सकते हो. यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड हियर. क्लियरली आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो यहाँ पे. ओके, कॉफी में नहीं किया जाता है स्किपिंग. कोकोनट इज बेसिकली अ टॉल प्लांट, आप उसका टिप जो है बेसिकली नहीं रिमूव करोगे, वो भी 5 to 8 सेंटीमीटर का. कॉटन की बात करें तो कॉटन में जो है इस तरह का प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, ठीक है. ग्राम में नहीं होता है, ठीक है, ग्राम में निपिंग होता है, ठीक है. पर ये जो प्रैक्टिस है वो किस में किया जाता है, टी में किया जाता है. तो डी जो है वो राइट आंसर होगा. एंड आई कैन सी सो मेनी ऑफ यू रिप्लाइंग विद द राइट आंसर हियर. Yes, Shinu, Saloni Kumar, Amrish Kumar, Arya S. Nair. Yes, D is the right answer for this question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल. यहाँ पे बात हो रही है डी सकरिंग की. ओके, डी सकरिंग की अगर हम बात करें, सो डी सकरिंग इज डन टू रिमूव ऑफ साइड शूट्स और अनवांटेड शूट्स मैनुअली एट सर्टेन इंटरवल्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इट इज प्रैक्टिस्ड. देखिए, आपको बताना है कि ये कौन सी क्रॉप में जो है फॉलो किया जाता है, ठीक है. तो ये जो है बनाना में फॉलो किया जाता है, ये ग्राम में फॉलो किया जाता है, टबैको में, मैंगो में, या ओनली 1 and 3 में फॉलो किया जाता है. ये किस में फॉलो किया जाता है आपको बताना है. व्हाट इज द राइट आंसर. 1 and 3. It means you are saying banana and tobacco. Okay. E. A. Okay. We are getting some mixed answers here. I think there is some kind of confusion. That's why we are getting some mixed kind of questions. Okay. So here I will see, where these kind of options added, like 1 and 3, 1 and 2, 1 and 1 only, 2 only. Students basically do get confused because these options are a little bit confusing. But yes, you will see that suckers जो है ग्राम में नहीं होते हैं, मैंगो में तो होते ही नहीं है. ओके, तो ये सीधा सीधा एलिमिनेट हो जाता है मैंगो वाला ऑप्शन. ग्राम में सकर्स नहीं होते हैं. ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है और इसमें हम कहीं पे भी हम ये जो है ग्राम के कल्टीवेशन में आप नहीं देखोगे कि सकर्स ग्राम में होते हैं. बट अगर हम बात करें बनाना में, तो यस, बनाना में क्लियरली इज यस फॉर सकर्स. ओके, बनाना में अगर सकर्स हैं तो डी सकरिंग भी की जाएगी.
ऑल्सो टबैको में भी डीसकरिंग की जाती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि टबैको में डीसकरिंग नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है, टबैको में डीसकरिंग की जाती है। तो राइट आंसर विल बी 1 and 3। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है, अगर आपको ग्राम एंड मैंगो का थोड़ा सा आइडिया है, तो यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस को कई बार एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। इफ यू विल सी देयर आर ओनली 4 ऑप्शंस, एक ऑप्शन तो आपको चूज करना है, 1 and 3 को तो आप लेके ही नहीं चलोगे, यू विल ओनली सी बनाना। आपको पता है कि बनाना में सकर्स होते हैं, ग्राम को आप एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, मैंगो तो डायरेक्टली एलिमिनेट है, ग्राम में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो भी नहीं लगाना पड़ेगा, एंड देन यू विल हैव योर करेक्ट आंसर्स। सो दिस इज बेसिकली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 1 and 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में। इन लाइफ स्पैन ऑफ बनाना, द टाइम फ्रॉम प्लांटिंग टू शूटिंग वेजिटेटिव, बेसिकली जो वेजिटेटिव फेज होती है उसकी बात की जा रही है, इज अबाउट 7 to 9 months with favorable temperature. Okay, how long the plant takes from shooting to harvesting? आपको बताना है कि शूटिंग से हार्वेस्टिंग का तक का जो टाइम होता है वो कितना होता है, कितना टाइम जो है बेसिकली प्लांट लेता है फ्रॉम हार्वेस्टिंग शूटिंग टू हार्वेस्टिंग। ओके, हियर यू कैन सी कि 7 to 9 months ले रहा है अपनी प्लांटिंग टू शूटिंग के लिए। तो शूटिंग से हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड जो कि आपको डेज में यहाँ पे दिया है 90 to 100 डेज। ओके, 80 to 90 डेज आपका जो है 90 to 120 डेज, और 150 to 160 days, and 80 to 90 days. These are the options, and now you will tell me what is basically the right answer for it. So we have till now we have one answer from Reshmi Singh, second from Rakesh, and Diya Bansal, Aman Singh, Amrish Kumar, Juma Adrak, Diya Bansal, Himanshu Sharma. Okay, yes. So the right answer for this question is 90 to 120 days. Okay. शूटिंग से हार्वेस्टिंग तक का जो बेसिकली टाइम पीरियड होता है वो 90 से 120 दिन का होता है, और जो वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करने का जो टाइम होता है जिसमें प्लांटिंग टू शूटिंग हम लगाते हैं वो हमारा जो है 7 to 9 डेज का होता है। तो आप इसको कंसीडर करें प्लांटिंग टू शूटिंग एंड शूटिंग टू हार्वेस्टिंग। ओके, यू कैन कंसीडर दिस सीरीज। यहाँ पे हमें टाइम लगता है 7 to 9 months, और यहाँ से आगे हमको लगता है 9 to 120 days. Okay, D for D's. So you can consider like this. Okay, so the right answer is 90 to 120. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ग्रेव्स हैज हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो? कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम, देखिए ट्रेनिंग सिस्टम ग्रेव्स में जो है इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बेसिकली इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ग्रेप में ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है एक गुड क्वालिटी ऑफ फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो आप देखोगे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रेप के ट्रेनिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसमें से आपको बताना है वो कौन सा ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम है जो हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है बेसिकली देता है, विच इज दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। बोअर सिस्टम आपका जो है, हेड सिस्टम, निफिन सिस्टम, ट्रेल सिस्टम, नन ऑफ द अबव। कौन सा जो है राइट आंसर है? यू विल गिव मी द आंसर फॉर दैट। सो आई कैन सी आर्या नायर, ओके, सेइंग सी, ओके, राकेश कुमार, अमरीश कुमार, रेशमी सिंह, अमन सिंह, दिया सिंह। ओके, so we are getting some mixed question here. Okay, yes, Kalpesh Dangar. Okay, so few people are saying boa system, few people are saying Niffen system, and few are saying trellis also. Okay, trail or trail system or trellis system also. Okay, so I would like to wipe out the confusion. The right answer is the boa system. Boa system is the most frequently used ट्रेनिंग सिस्टम इन ग्रेप में सबसे ज़्यादा जो सिस्टम यूज़ किया जाता है वो बोअर सिस्टम होता है। मोर देन 50% ऑफ ग्रोअर्स जो होते हैं वो बोअर सिस्टम ही यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स कन्वीनियंट एंड इट इज़ ईजी टू यूज़। ओके,
I hope you got the right answer now. Boar is basically the right answer. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following is a non-climatic fruit? आपको बताना है इन ऑप्शन में से नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट कौन सा है. देखिए सबसे पहले क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के बारे में जानते हैं. नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट और क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं बेसिकली आई जस्ट राइट इन द शॉर्ट. क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो होते हैं वो फ्रूट्स जो कि हार्वेस्टिंग के बाद भी रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है इसे कंटिन्यू रखते हैं. इट मींस राइपनिंग प्रोसेस भी कंटिन्यू रहता है हैंड टू हैंड. ओके, एंड उसमें क्या होता है जब राइपनिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो इथाइलिन का प्रोडक्शन भी कंटिन्यूस रहता है. एंड व्हेन इथाइलिन प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग तो जो फ्रूट की शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ही कम हो जाती है. इट इजीली डिटोरिएट्स इन द रूम टेम्परेचर. ओके, एंड अगर आप इसे हार्वेस्ट करके रखते हो इमेच्योर कंडीशन में तो बहुत जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे एक टाइम के बाद जो है ये राइपन हो जाता है. अगर आप एग्जांपल लोगे मैंगो का तो मैंगो क्या होता है बहुत सारे हार्वेस्टर क्या करते हैं मैंगो को ग्रीन स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं एंड यू विल सी आफ्टर सम टाइम उन्हें रख दिया जाता है रूम टेम्परेचर में एंड देन दे राइप. ओके, तो ये तो है क्लाइमेट्रिक. नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स क्या है. नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है और इथाइलिन प्रोडक्शन भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है. तो यू कैन कीप दोज फ्रूट इन द रूम टेम्परेचर. Also the shelf life for the non-climatic fruit is basically way far than climatic fruit. तो जो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट का जो शेल्फ लाइफ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू क्लाइमेटिक फ्रूट. दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन क्लाइमेट्रिक एंड क्लाइमेटिक फ्रूट. ओके, now here are the options: lychee, mango, apple, banana and guava. Now what is basically the suitable option according to these options? कौन सा ऑप्शन है जो सुटेबल ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दिस दीज ऑप्शंस? यस, लीची जो है वो आपका क्या है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है. इट इज द राइट. लीची इज द नॉन क्लाइमेट्रिक fruit. Okay, and I have got answers from Subhash Kumar Chaurasia, Diya Reddy and Lakshman Khedkar also. Yes, so lychee is basically the right answer. Okay, so how you can just understand the concept. अगर आपका concept clear है तो आपके जो answers होंगे वो भी जो है clear होंगे. ओके, सो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चंस हैं वो समझ आए हों, लैंग्वेज जो है वो समझ आए हों और ये जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा हो कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ वी कैन रिलेट द क्वेश्चंस फ्रॉम द आंसर्स. ओके, सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस करे एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइक दिस. So this is basically the last question. I'm glad that so many people replied with the right answer, and I can see that you really have the good sense of understanding the questions, whatever the questions I was showing on the screen. Abrish Kumar, you're most welcome. I hope it's helpful for you and it will be helping you out in solving questions. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. टिल देन आई होप जो है यू गाइज विल प्रिपेयर वेल and good luck for all of your exams. Do prepare well and let's meet in the next live session. Thank you so much for joining the live session. Take care guys.